Hi guys, welcome back to another fresh episode of your favorite show about technology, Tech with TG. And the simple reason कि ये show आप सभी का favorite है, उसका जवाब ये है कि I talk about tech, and we try to discuss things on a bigger scale, जहाँ पे हम बात करते हैं आखिर कि जो सवाल आपके मन में चलते हैं about technology, उनके answers क्या हो सकते हैं. And the biggest question that comes to mind whenever you think of buying a new laptop or a new computer, something except the budget is always कि एक Mac या Windows. और ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. और अभी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्कूल एंड कॉलेज सीजन, तो आई एम श्योर आपके मन में शायद ये सवाल चल रहा होगा कि आपको एक मैकबुक लेना चाहिए या एक विंडोज़ लैपटॉप या आपको एक पीसी को बिल्ड करना चाहिए. सो इन टुडेज एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी मैं सब कुछ डिकोड करने वाला हूं. वी गोना कंपेयर, वी गोना सी द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑफ ईच ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स सो दैट यू गेट द आंसर कि आखिर आपके लिए दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है. माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. आई एम श्योर सभी के दिमाग में ना एक प्रीसेट होता है कि लेट्स से मैक इज बेटर और विंडोज इज बेटर, या मतलब आप सभी ने कुछ ना कुछ थॉट्स रखे हैं अपने दिमाग में. सो लेट्स पुट देम ऑल साइड एंड अभी हम एकदम क्लियर माइंड के साथ में आगे बढ़ते हुए वी गोना कंपेयर अक्रॉस डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कि आखिर कहाँ पे मैक ज्यादा बेहतर हो सकता है या कहीं पे विंडोज बेहतर हो सकता है. एंड आई एम श्योर लाइक वी नीड टू कंपेयर इट दैट वे बिकॉज अदरवाइज देयर इज नॉट अ क्लियर विनर टू बी ऑनेस्ट. अभी हम देखते हैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स में कि कहाँ पे कौन सी साइड ज्यादा भारी पड़ती है. I think the most important bit, price. Usually what we see is that the Mac is on the pricier side, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा expensive होगा. ज़्यादा जो starting range है, I mean the starting price let's say for Macs is high, compared to Windows. And the simple reason is that Apple controls everything. Apple controls the hardware, Apple controls the software. It's completely, controlled by Apple, and that's the reason Apple controls the price too. On the other side, if you talk of Windows, so ऐसा नहीं है कि Windows में आपको expensive laptops या expensive PCs नहीं मिलते हैं. You do get them. At the same time, Windows, you will see a huge variety of devices because the hardware is kind of distributed. At the same time, we see that the portfolio is really huge. मतलब आपको एक 20,000 का Windows लैपटॉप भी मिल सकता है और आपको एक 5 लाख का Windows लैपटॉप भी मिल सकता है. Okay, so this is about hardware. Again, going in line with the first point, यहाँ पे भी because Apple is kind of in control of what options we get, sometimes they are not really that customizable. अगर आपको एक specific type का laptop चाहिए with some exact specific requirements, it is at times difficult, if you want to pick a MacBook because हो सकता है वो exact same of hardware जो आपको चाहिए, the exact kind of set of things वो आपको ना मिले. But on the other side, if you talk about Windows, यहाँ पे you definitely get a huge variety to choose from. At the same time, sometimes the customization is possible to the core, जहाँ पे आप एक एक चीज को बिल्कुल pick करके as per your requirements, you can build your own PC or maybe you can buy a new laptop because बहुत सारी variety है. You have number of brands, you have different sort of things. आपको एक i3 चाहिए with let's say 2 TB storage, तो मिल सकता है. और you can mix and match at times you can swap the hard drive. लेकिन Mac में ये चीजें possible नहीं है. Okay, so here comes the customization. Now, again, it is kind of getting in the lines of, let's say, iOS versus Android. Windows being the Android, of course. कि the Windows side of things is highly customizable.
आप द काइंड ऑफ मिक्स मैच करते हुए अपने लिए सिस्टम बना पाएंगे ना, वो मैक साइड में एट टाइम्स इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट थिंग्स डन दैट वे, बिकॉज विंडोज में अगेन सॉफ्टवेयर यू कैन कस्टमाइज द वे यू वांट, यू कैन मिक्स एंड मैच डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स गोइंग अलोंग, आप अलग टाइप का कीबोर्ड माउस, ऑल्दो यू कैन डू द सेम थिंग्स इन मैक एज वेल, बट समटाइम्स you would see that Windows is more in terms of customization, giving you more in terms of customization compared to Mac. At the same time, because Mac is kind of a logged system, I would say is more stable, it's more secure, it's more intuitive, at times very easy to use, and it just get things done. So it's up to you कि आप इस पॉइंट को Mac OS की स्ट्रेंथ मानेंगे या Windows की स्ट्रेंथ मानेंगे, बिकॉज नॉट जस्ट द स्ट्रेंथ, एट द सेम टाइम आपको साथ में एक ट्रेड ऑफ भी फेस करना पड़ेगा. Windows जितना कस्टमाइजेबल है उतना ज़्यादा फिर हम देखते हैं कि समटाइम इज प्रोन टू एरर्स एज वेल. तो आपके ऊपर है द वे यू लुक एट दीज थिंग्स, बट दैट्स हाउ द कस्टमाइजेशन बिट इज इन कंपैरिजन ऑफ Mac वर्सेस Windows. Guys, next comes user interface, the UI जिसको आप use करने वाले हो daily basis. To be honest, if I give you a comparison, Mac is really easy and simple to use. अगर आपने कभी Mac use नहीं किया है, still the moment you start using it, बहुत आसान है. The kind of options you get, the kind of layout it is, मतलब काफी easy for any first time user to get used to a Mac system. Windows on the other side, it is like a complex system, to be honest, to begin with, because the kind of stuff that's going on in terms of the UI, the way the settings are, the way everything is kind of mixed together. Sometimes for a first time user, or sometimes for someone who just wants कि उसका काम हो जाए, Mac becomes the choice. And at the same time, the kind of software support you get in Mac is kind of a yearly update in terms of security and new OS. Windows में ऐसा नहीं होता है. Windows में like the version of Windows that we get, they are not like an annual release. तो वहाँ पे भी you might see कि अच्छा ठीक है, it's getting थोड़ा सा complex. Mac on the other side is very simple and easy to use. This is very important. Security. यहाँ पे the way it works is the Mac systems, they are generally considered more secure compared to the Windows side of things. और उसका simple reason ये है, if you look at the market share of Windows globally, अगर आप देखोगे, so Windows का जो market share है वो Mac comparison में कहीं ज़्यादा बड़ा है. And for any hacker or anyone to target a set of device, उसके लिए Windows उसको target करना at times is more beneficial, because they are able to target a bigger set of group. Mac में on the other side, if you see, because the user base is limited to begin with, so they are not really the preferred target for hackers. At the same time, the way the entire system behaves, because everything is kind of logged into one place, we see that the Mac systems are comparatively more secure, versus Windows in terms of, let's say, online viruses जो कई बार browse करते हैं, and the Windows systems are very easily affected. Macs, they are kind of very much kind of like एक safe zone आपको provide कर देते हैं against all these basic daily set of attacks. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये आप में से बहुत लोगों के मन में आता है, अबाउट द एप्स. एंड यहाँ पे एट टाइम्स आई थिंक देयर इज मिस इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमें लगता है कि शायद जो मैक यूजर्स हैं उनको लगता है कि विंडोज में तो एप्स काम नहीं करती होंगी, या जो विंडोज यूजर्स उनको लगता है कि मैक में शायद हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट काम नहीं करता है. गाइज, today the situation is such कि the kind of app ecosystem for both these platforms is really matured. मतलब आज की डेट में जितने भी पॉपुलर एप्स जो भी आप यूज करते हैं, मोस्ट केसेस में आप यही देखेंगे, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, कि वो दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए इजीली अवेलेबल हैं. You can use MS Office in Mac without any issues. At the same time, आप Windows के अंदर भी सारे सॉफ्टवेयर जो आपको मिलते हैं, you can easily use them. The only exception is some of the apps which are limited. For example, Final Cut Pro
which is a pro app for editing videos, ये केवल Mac पे ही available है because it is coming straight from Apple. So there are a certain few apps जो कि शायद केवल Windows के लिए हैं या केवल Mac के लिए हैं, but most cases में they are kind of available for both these platforms. Okay, so this gets very interesting the moment you talk about performance. क्योंकि if you see side by side, a really powerful MacBook versus a really powerful Windows laptop, you would see at times कि हाँ, they both are really powerful. But the thing is that Apple, because right now Apple machines are using Apple's own silicon. And the way Apple is able to utilize the entire hardware, because Apple controls both the software and the hardware, the kind of performance or the kind of stable performance you get in a Mac, at times it's very difficult to achieve that in a Windows machine. And now at the same time, the way the software updates are, or the way the kind of support that you get from Apple, लंबे टाइम तक you would see that the Mac is able to give you a good sustained performance versus a Windows laptop जो शायद कुछ टाइम बाद आपको जैसी performance वो दे रहा था वैसी ना दे पाए. However, if you want to do editing over photos, videos and all these things, Mac का वहाँ पे एक edge होता है. And I'm sure you all must have noticed, no matter which DJ you see, mostly all these DJs, all these music guys, they prefer Mac. Number one, क्योंकि they don't want कि चलते concert के बीच में उनका laptop जो है वो hang हो जाए. Mostly Macs are stable that way. At the same time, the kind of apps you get for the music production, they are really powerful on the Mac side of things. So it's a kind of game जहाँ पे आपको pick करना है कि the kind of performance you looking at in comparison of Mac versus Windows. So guys, if we were to come to a conclusion, in a nutshell, मैं आपको ये बता सकता हूँ that both these platforms, they have their own set of pros and cons. So you need to first decide what exactly you want, what's kind of uses that you have, and उसके बाद में you make your pick कि आपको एक 50,000 का लैपटॉप ज़्यादा बढ़िया काम आएगा, या हो सकता है you want an assembled PC, or maybe you want a Mac Mini, or maybe a MacBook Air, or maybe a high-end Windows gaming laptop. So I think that option you need to keep open for yourself, and उसके बाद में अगर आप pick करते हैं, I think you will make a right choice. और अगर you want that I make a detailed video in terms of i3 कहाँ पे अच्छा है और i5 कहाँ पे अच्छा है या फिर i9 किसको लेना चाहिए, I might bring in that video as well. But अभी के लिए break के बाद when I come back, I'm gonna talk about ecosystem. That this question of Mac versus Windows, let's say, ये ecosystem क्या है and how exactly these digital ecosystems are kind of driving us either into them, or maybe they're just keeping us within this one ecosystem. ये सारी बातें break के बाद in Tech with TG. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show of Tech with TG. मतलब this show is I think the one destination for all of you जहाँ पे भी हम बात करते हैं decoding technology, तो this is your place जहाँ पे आप सभी को आना चाहिए, and you all come every week. और इस हफ्ते हमने अभी तक बात किया ब्रेक से पहले about Mac versus Windows, that आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, या फिर Mac अच्छा है या Windows अच्छा है, प्राइस कैसी है, how is the hardware, how is the performance, and I'm sure you'd be able to make up your decision, the right decision कि आपके लिए एक सही product क्या होगा. But where this question came in from? Because the kind of world, guys, we're living in right now, these big tech giants, you talk of Microsoft, you talk of Amazon, Meta, Apple, Google, they all kind of have their own ecosystem, their own small little world of connected devices. And believe it or not, आप भी और मैं भी, हम सभी किसी न किसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, या शायद कोई एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पे हम ज्यादा इन्वेस्टेड हैं. थोड़ा सा इसी को डिकोड करते हैं that how things are. Okay, I'll give you a situation. Now the moment you buy a phone,
let's say it's an Android, you are somehow linking yourself to Google because you need to have a Google account to use that Android phone. Same way, the moment you buy an iPhone, you would be linking yourself to Apple because you'd want to set up an Apple ID to use that iPhone. Now this is just for the first device. अब उसके बाद जैसे ही आप अपना second device purchase करते हैं, let's say you buy a laptop, अब यहाँ पे जो लैपटॉप आप ले रहे हैं, इफ यू बाय अ मैक और इफ यू बाय अ विंडोज, एंड वहां से दिस इकोसिस्टम स्ट्रेंथन्स बिकॉज अभी 2 डिवाइसेस हो गए हैं एंड समटाइम्स दीज ब्रांड्स दे गेट द पावर टू काइंड ऑफ कंट्रोल यू इवन मोर, टू काइंड ऑफ लिंक योर थिंग्स विद इन दीज 2 डिवाइसेस. अब इसके बाद में एक और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. यू बाय एन एडिशनल स्मार्ट वॉच, or maybe an earphone, or maybe a smart home device, or maybe a camera, or maybe a smart set of speakers. You're thinking where I'm going? यहाँ पे इस तरीके से, because we all are enjoying these multiple set of things, we are kind of in an ecosystem. Sometimes it's hardware specific, sometimes it's software specific. अब हो सकता है कि आप Android यूज करते हैं, but the phone that you use is of Samsung. And then you buy a Samsung laptop, and then you buy a Samsung tablet and a Galaxy Watch. तो कहीं ना कहीं in a way आप Google के तो ecosystem में हैं, but maybe you are more in the ecosystem created by Samsung side of things. So it gets very complex at times, but believe it or not, आज हम सभी किसी न किसी ecosystem का हिस्सा बन चुके हैं, and sometimes it's very convenient for us. But guys, just think about it. In this space, if there's a monopoly, yeah, if there's a tech giant getting really powerful to be able to control almost everyone, things might get scary. I mean, today it's all good, let's say, but tomorrow the issues could be in terms of censorship, in terms of privacy, in terms of dominance. और यहीं पे हमको लगता है कि we need to be well aware, so that you just are not trapped in an ecosystem, because the way your habits are, the way your friends are talking to you, the way your normal everyday lifestyle is, उसको पूरा बदल के if you try to move out from that one ecosystem to another one, things at times get really difficult. और उसी के चलते maybe you end up kind of surrendering कि ठीक है, this is the way it's going on और अब ऐसा ही चलता रहेगा, and that's how my life is. So I hope you get this idea about ecosystems. By the way, idea आपको मिल गया होगा about Mac versus Windows. If you have any suggestion, any feedback, any question, any query, whatsoever, the address. It's tg@ndtv.com. I'm gonna see you next week with something even more exciting, something जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ और excitement से भरी हुई technologies के बारे में in the tech space. See you next time. That's all for this week. My name is Gaurav. You have been watching Tech with TG. Have a good day.